हेलो। हाय। तो बच्चों, दिस इज द इंट्रोडक्टरी सेशन फॉर ACM सिक्का IIT कानपुर स्टूडेंट चैप्टर एंड आई एम रिया. आई एम अ लीडर हियर. बाकी देवधर, Srijan, Divyanshi and Utkarsh are my colleagues, and we also have the chair here, Shashwat. Okay, so we'll be taking your session. यहाँ पे पहले we'll start with what ACM is, सिक्का is. We'll go about explaining what HCI is. ठीक है, फिर उसके बाद हम थोड़ा प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में भी बताएंगे और सेकी रिक्रूटमेंट के बारे में भी बताएंगे. तो अभी लेट्स वेट फॉर लाइक 2 more minutes. 5 तक वेट करते हैं, 16:05 तक. उसके बाद we'll start. ठीक है. Okay, then, so let's get started with the session. Good evening to everyone. So we are the ACM Sikai IIT Kanpur student chapter, and we basically deal with human-computer interaction. Okay, and that is what HCI stands for. So, in a nutshell, HCI is about usefulness and usability. Now, both sound similar but are actually very different things. Usefulness is, are we building the thing right? And usability is, are we building whatever we're building in the right manner? Okay, so are we, the technology that we're building, whatever interface जो भी technology build कर रहे हैं, जो भी research कर रहे हैं, is it actually useful? And अगर वो useful है तो उसको ढंग से implement कर रहे हैं कि नहीं? That is what HCI is all about. And where does it help? A lot of project management, software development and design uses human computer interaction, because see, humans invented computers and now we're interacting with those same computers. So HCI is at the core of technology. तुम जो भी करोगे, finally it has to have an impact on people, on humans, and to ease that interaction is the purpose of human computer interaction. Okay, which also makes it interdisciplinary. So here we deal with psychology. Ki what exactly makes things easier for us to deal with? Why do we find some interface, more user friendly and some interface not? Why do we prefer Hello IITK over Pengala when it comes to interface? I mean, both of them have different functions, but yeah. Then we deal with computer science, of course, because the other term here is computer. So there we deal with hardware, AI/ML, UI/UX, interaction ethics, of course. When it comes to ChatGPT and other LLMs as well, you have this disclaimer that's displayed that the responses that we receive from ChatGPT might be biased.
So we're trying to minimize that bias. We're trying to make interaction ethical. It won't be useful for us. It'll be pretty harmful if computers they start being hostile to humans when it comes to even responding, right? These things are far reaching consequences. So that's interaction ethics. Then what is HCI not? It's not about making things pretty or about colors and layouts alone. Of course, we want to make it user friendly, but it also has to have a particular purpose in mind. It needs to be functional. It's not just about making things very pretty and ooh, ah. It's about finding elegant and usable solutions to problems. So it's art, science, and moreover, it's all about creativity. From here on, we'll proceed to tell you about what ACM Sikai is about. So, ACM Sikai is this interdisciplinary group of computer scientists, software engineers, psychologists, interaction designers, graphic designers, sociologists, and more, just to name a few. Okay. Um, so, you have a lot of humanities here involved as well as technical things. What brings us together is a shared understanding of designing useful and usable technology. And here you need an input from everyone. You need an input from people who know a lot about humans. You need an input from people who know a lot about technology, because we want to make the latest technology that's available to us useful, and we want to make it usable for humans. Okay, so Sikai has 26 conferences, and we sponsored 26 computer human interaction conferences annually, including our flagship conference, which has been organized every year since 1983. So we're coming here to IIT Kanpur and we're recruiting Sekis this time, but it's actually a very well established organization, ACM and Sikai. So ACM stands for, by the way, the Association of Computing Machinery, and Sikai is a special interest group for computer human interaction. So we have a faculty advisor, Ms. Shruti ma'am, and she is from the Department of Computer Science. She's an associate professor there. She's also an adjunct professor at the Department of Cognitive Sciences. And we here want to consolidate HCI research for interdisciplinary collaboration to create socially impactful real world projects. This includes solving problems that occur in the campus, that occur in Kanpur, things we see in real life. As Etsi Verma said during our orientation, the real world is not defined in the walls of IIT Kanpur. We are actually living a very good life here compared to the real world outside Kanpur city. It's not as developed. So we want to make this technology more accessible to the real world people, the common man, right? And we want to focus on redeveloping, as I said, and redesigning technology, because some people they might not be educated enough or able enough to understand or interact or use the technology that we deal with today. It might not be as friendly for them as it is for some people. Okay. So when it comes to HCI, this is a basic roadmap right here. So what you can start with, if you're interested in the field, if this has gotten you hooked, you can start with the basics. What is HCI that I told you about? Understanding the design process. So as I said, it's not just about making things beautiful or pretty or visually appealing. Of course, that's a part, but that's not just what it's about. And what do you need to learn here? Since it's interdisciplinary, it can be overwhelming for a lot of people to, you might think, oh, I might have to learn a lot about psychology. I need to learn so many technical skills as well. How will I do it in a go? So that's what this roadmap is for. It's to make things easier for you. So step two, now, since we know what we need to learn, I have defined these things here in step two. So cognitive psychology, anthropology, user-centric design, and qualitative data analysis. We will be sharing resources for these things regularly. And since HCI is more about application than theory, even when it comes to research, um, you don't have to delve very deep into the theory when you're just getting started. So these are the things that you have to know a bit about to get to the next step, which is technical skills. So now you know what to do. You can plan a project after step one and two.
And using step 3, technical skills, you can implement it. So that includes web or app development, whatever way you want to reach out to the person, the computer part of it, and working with AI or ML models to actually design what you're trying to implement, design tools to make it to make an interaction interface, and data analysis, because this is all about, again, you will learn in the design process that data analysis is all about designing based on the response you get, and for that you have to analyze data well, you have to collect data well. So that's all about data analysis. It's very important for our field. Then, as you know, step 1 and 2 and 3, you come to step 4, where you gain experience, you take up projects, you participate in hackathons, competitions, and you apply for internships. So Sikai can really help you take up these research projects or even corporate projects here. We receive a lot of funding, we have a lot of reach, we have a big name outside as well. So Sikai can really help you through all this. And step 5 again is to connect and update. So now that you have experience, you have the skills, you have exposure, you can join communities to grow your network. ACM Sikai IIT Kanpur Student Chapter, of course, is one of these communities. So we're helping you here right from scratch to develop your interest, to develop your expertise in this field. And you can also help, you can also keep up with the latest research and development by connecting to other people, by reading up on research projects, right, and renewing your knowledge, refreshing it. Okay, Utkarsh will be taking over after this. So hello guys, SC has already explained you what is HCI, what it is all about, and a little intro about the how you can approach HCI through its roadmap. So अब मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा समझो कि एक पीएस को हम जनरली कैसे अप्रोच करते हैं, नॉट जस्ट थ्रू एचसीआई, इन जनरल एक पीएस को कैसे अप्रोच करते हैं। इट विल हेल्प यू इन एचसीआई आल्सो। जब भी तुम एचसीआई पे कोई प्रोजेक्ट उठाओगे तो तुम्हें ये बहुत हेल्प करने वाला है। तो मान लो कि तुम अब Y24 आने वाले हैं तुम लोगों के लिए, Y23 के लिए। तो सपोज करो तुम गाइस कुछ नया चाहते हो उनके लिए। तो अब तुम क्या चाहोगे कि उनके लिए एक हम नई ऐप बनाएं, या फिर कुछ भी जो उन्हें दिक्कत होती है वो सब देखें, और लाइक उनको कुछ भी हेल्प करने के लिए एक नई चीज बनाए अपन। तो अब तुम्हें उसको लिए कैसे सोचना होगा। सबसे पहले तुम सोचोगे उसमें क्या क्या आना चाहिए। लाइक अब वो तुम कैसे सोचोगे कि जब हम आए थे तो हमें क्या क्या दिक्कतें हुई थी, राइट? कि हमें ये चीज मिल जाती तो बेटर रहता। आई नो हमें एसजीज अलॉट होते हैं, बट यू कांट आस्क एवरीथिंग फ्रॉम द एसजी, इवन अ लिटिल थिंग। सो इसलिए तुम सोचोगे पहले इसमें क्या क्या होना चाहिए। लाइक कुछ मैप्स वगैरह होने चाहिए, कि ये रास्ते इजी पड़ते हैं, या जनरली एक जब हम सबसे पहले लेक्चर हॉल जाते हैं तो वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन वगैरह होता है। पहले तुम यू विल पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ द वांट्स, कि तुम्हें किसकी बात कर रहे हो, किसको कितनी नीड्स हैं, वो तुम नीड्स देखोगे। फिर तुम देखोगे इनमें कौन कौन से फीचर्स हमारे लिए फिजिबल हैं क्रैक करने, इनमें से किस किस चीजों को हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देन यू विल प्रायोरिटाइज अकॉर्डिंग टू योर फंडिंग एंड ऑल, कि तुम्हारे पास कितनी फंडिंग है, तुम्हारे पास कितना टाइम है, तुम्हारे पास कितने रिसोर्सेज है बनाने के उसे। तुम्हारी प्रॉब्लम डिफाइन हो जाएगी। अब उसके बाद भी दिक्कत आती है, मान लो तुम्हारे सब कुछ फीचर्स वगैरह इंक्लूड हो गए, तुम्हारे फीचर सिलेक्शन हो चुका है कि हम क्या क्या फीचर्स इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। अब नाउ इट विल बी अ बुक, और इट विल बी अ वेब, और वेबसाइट, और इट विल बी अ ऐप। वो यूजर पे डिपेंड करता है कि यूजर जनरली क्या चूज करना चाहता है। तो जब बच्चे आते हैं, कोई फ्रेश मेंस आते हैं हमारे यहाँ पे, तो उनके लिए फोन्स वगैरह अलाउड होते हैं। सो अगर ऐप होगी तो अच्छा है, और अगर ऑफलाइन ऐप होगी तो और अच्छा है। तो कुछ डाटा हम ऑफलाइन अवेलेबल कर सकते हैं, कुछ डाटा हम ऑनलाइन अवेलेबल कर सकते हैं, इस तरह की चीजें। और मान लो कि अगर फिजिकल हैंडबुक बनाने के नाम पे आता कि लाइक फोन्स अलाउड नहीं होते, तो वी विल गो फॉर हैंडबुक। तो हमें देखना होता है कि ये चीजें हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फिर। बाकी ये एक सिनेरियो था, ऐसे काफी सारे सिनेरियो बन सकते हैं जब तुम कोई भी प्रॉब्लम अप्रोच करते हो। तो उसके लिए अब हम एक जनरल रोड मैप देखेंगे कि एक जनरल डिजाइन प्रोसेस क्या होता है।
So design thinking, as Ria already told you, कि design is not about just UI UX designer कि बस तुम्हें वो चीजें डिजाइन नहीं करनी है कि उसे सुंदर बनाना एंड ऑल। तो डिजाइन करना इज लाइक पूरा बिल्ड करना एवरीथिंग, कि तुम्हें यूजर के लिए अच्छे से चीजें बिल्ड करनी है, तुम्हें अच्छे से उनके लिए चीजें डिफाइन करनी है। तो सबसे पहले तुम एम्फेसाइज करते हो, तो इसमें क्या करते हो, यू पुट योर सेल्फ इन द शूज ऑफ द यूजर। उसके हिसाब से देखते हो उसे क्या-क्या दिक्कतें आएँगी, क्या-क्या नीड्स होंगी उसकी, वो सारी नीड्स तुम डिफाइन करते हो। फिर एक तुम्हारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन हो पाती है। एटलीस्ट एक बेसिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुम्हारे पास इस लेवल पे डिफाइन हो जाएगी कि प्रॉब्लम ये आएँगी जनरली यूज़र को। और मान लो तुम्हारे पास एक टेम्पलेट आ जाएगी, टेम्पलेट 1, टेम्पलेट 2, टेम्पलेट 3 की 3 प्रॉब्लम्स हैं ये। वी विल इंक्लूड दीज़ एटलीस्ट। ओके, देन यू विल मूव टू आइडिएशन कि अब इन्हें बनाना कैसे है, ठीक? देन अभी मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ ये सब। देन यू विल मूव टू आइडिएशन। फिर तुम एक प्रोटोटाइप बनाओगे। अब जब तुम प्रोटोटाइप बनाने पाओगे, तो तुम देखोगे प्रोटोटाइप में ये दिक्कतें आई हैं, इस वजह से हमारे ये नहीं चल रहा है। फिर तुम दोबारा आइडिएशन पाओगे, दोबारा प्रोटोटाइप बनाओगे, दोबारा आइडिएशन पाओगे। फिर तुम एक फाइनली प्रोटोटाइप जब तुम्हारा बन जाएगा, एटलीस्ट जो तुमने सोचा था, उसका टेस्ट करोगे दोबारा। अब टेस्ट करने के बाद तुम सारे प्रोसेस दोबारा रिपीट करते हो। तुम्हें हो सकता है प्रॉब्लम दोबारा डिफाइन करनी पड़ जाए, क्योंकि वो जो टेस्टिंग थी वो उस हिसाब से यूजर्स के हिसाब से चली नहीं। जैसे मैं अब एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लो कि तुम्हें स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट लेना है, ठीक है? तुमने एक प्रोजेक्ट उठाया स्मार्ट एग्रीकल्चर। अब उसके बाद तुम देखोगे फार्मर्स को उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, लाइक क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। कोई बोलना चाहेगा और दिक्कतें गिनवाना चाहेगा? एनीवन? गाइस, एनीवन? कोई? सॉइल के टाइप्स में वगैरह। ओके, हाँ, सॉइल। हमें ये नहीं पता रहता सॉइल में कितने न्यूट्रिएंट्स ज्यादा या कम है किसी टाइम पे। और ये इरिगेशन वाटरफॉल कैसा होता है उस एरिया में। हाँ, इरिगेशन ठीक है। और कोई? weather patterns will be हाँ, कैन यू रिपीट weather योरसेल्फ? patterns वेदर में हाँ, कैसे चेंजेस तो आते हैं। या तो बेसिकली हाँ, हमने काफी सारी दिक्कतें सोच सकते हैं हम बेसिकली। कुछ जैसे कि अभी उन्होंने बोला इरिगेशन की दिक्कत होती है कि रेगुलरली इरिगेट करना पड़ रहा है हमें, बट इरिगेशन के हमें नीड्स नहीं पता, किसी टाइम पे न्यूट्रिएंट्स की हमें नीड नहीं पता कि इस टाइम फर्टिलाइजर चाहिए या नहीं चाहिए, या इस टाइम कौन सा प्रोटीन वगैरह चाहिए उसे। तो वो सब नहीं पता मान लीजिए हमें। तो ये सब एक हम जनरल प्रॉब्लम एम्फेसाइज करेंगे। और एक प्रॉब्लम हो सकती है कि जैसे आग लग जाती है, तो सपोज करो कॉर्नर में आग लगी है, क्योंकि काफी बड़े एरियाज होते हैं ये। सपोज कॉर्नर में आग लगी है और जितने में हमें पता चलता है उतने में काफी सारा एरिया बर्न हो चुका होता है। और एक बार बर्न लैंड पे फिर दोबारा एग्रीकल्चर भी इजी नहीं हो पाता। तो सपोज करो हमने ये 3-4 प्रॉब्लम ली। अच्छा, अब ये हमने अपने को एज़ अ फार्मर सोचा और ये 3-4 प्रॉब्लम ली, जिससे हमारी प्रॉब्लम डिफाइन हो गई। ठीक है? अब तुम आइडिएट करोगे कि इन प्रॉब्लम्स को तुम्हें सॉल्व कैसे करना है। सपोज करो कि अभी हमने 2-3 प्रॉब्लम ली इरिगेशन एंड ऑल। तो सबसे पहले इरिगेशन, इरिगेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम? बेसिकली अब हम चीज़ें ऑटोमेट करने पाएँगे, क्योंकि मैनुअली फिर भी फार्मर देख सकता है, चीज़ें ऑटोमेट करने पे आना है हमें। ठीक है? तो फायर डिटेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं हम? ठीक है। फायर डिटेक्शन के लिए बेसिकली क्या कर सकते हैं हम कि हम वहाँ पे फ्लेम सेंसर्स वगैरह जगह-जगह पे इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड इट विल बी कंट्रोल्ड थ्रू अ सिंगल माइक्रो कंट्रोलर एट द बेस। तो अब हम प्रॉब्लम आइडिएशन करने पे आ गए हैं कि हम इस प्रॉब्लम को आइडिएट कैसे करेंगे। ठीक है? तो हमने 2-3 प्रॉब्लम डिटेक्ट करी सबसे पहले, कि हमारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसके लिए तुम एक सॉइल सेंसर करके आता है, दैट यू विल इम्प्लीमेंट कि इसका बेसिकली पीएच नाप सकते हो, या फिर सॉइल का पीएच से काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। इस समय अल्कलाइन है, एसिडिक है, उस हिसाब से तुम अपने उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह डाल सकते हो। ठीक है? अदर थिंग, तुम फ्लेम सेंसर्स लगा सकते हो। इरिगेशन के लिए देखो 2 चीज़ें आती हैं, एक जनरल इरिगेशन होता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, बीच में स्प्रिंकलर लगा सकते हैं, एंड दैट वी कैन ऑटोमेट। ठीक ठीक है? कि जिस हिसाब से लाइक अगर टेम्परेचर ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी कम है, तो उस दिन इरिगेशन ज़्यादा चाहिए होगा हमें, ठीक है? तो हम एक बेसलाइन सेट करेंगे इरिगेशन की, देन वी विल इम्प्लीमेंट कि आज इतनी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है, तो तुम्हें इतनी देर इरिगेट करना है। बेसिकली दैट स्प्रिंकलर विल रन फॉर दैट टाइम। ओके, अब ये सब कम्युनिकेट कैसे होगा? तो हमें क्या करना होगा
कि फील्ड पे जगह-जगह पे हमें पोर्शंस डिवाइड करने होंगे, उन पोर्शंस पे हमें एक सिंगल माइक्रो कंट्रोलर लगाना होगा और फिर एक बेस का माइक्रो कंट्रोलर लगाना होगा। तो बेसिकली तुम एक ऐसा प्रोटोटाइप बनाओगे। इन जनरल तुम एक ऐसा प्रोटोटाइप बनाओगे छोटा-सा। अभी पूरे तुम लाइक 100 एकड़ के लिए नहीं बना रहे होंगे, तुम एक रूम के लिए प्रोटोटाइप बना रहे होंगे। जब तुम उस रूम के लिए प्रोटोटाइप बना रहे होंगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये चीज़ जैसे इसके डॉक्यूमेंटेशन में लिखी थी, काम नहीं करी एंड ऑल। फिर तुम दोबारा उसे आइडिएट करोगे कि अब ये नहीं कर सकते, तो हम ये क्या करेंगे? तो फिर दोबारा तुम प्रोटोटाइप बना के टेस्टिंग करते रहोगे एंड यू विल रीडिफाइन द प्रॉब्लम, री-आइडिएट इट, बिल्ड इट्स प्रोटोटाइप एंड देन फाइनली जब तुम्हारा प्रोटोटाइप चल जाएगा, तो फिर तुम लार्ज स्केल पे उसे एक्सपेंड करोगे। तो एक जनरल पीएस को अप्रोच करने का यही प्रोसेस होता है एंड इट इज अ नॉन लीनियर प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि तुम पूरी एक बार में अपनी अप्रोच डन कर सकते हो लाइक। ओके, सो आप कुछ हमारे पास्ट प्रोजेक्ट्स बताएंगे देवभर। So hello किसी everybody, को good डाउट evening. किसी को डाउट है कुछ पीछे अभी तक, कि अब किसी को कुछ पूछना हो? एक तो देवधर ही करना है। Okay. So guys, will be taking up doubts at the end of the session. So if you have anything to ask for us, you are free to like unmute yourself at the end. So basically, I'll drive you through the past projects that we have done. So firstly, let's dwell into our ideology. The ideology that drives our effort at ACM Sikai IIT Kanpur is lies in the core belief that we want to improve human-computer interaction and we want to build sustainable changes within the lives of common people and contribute to the welfare of the society. We have undertaken our projects with this mission at heart, aiming to use technology to create a positive social impact. So let's dwell into the projects that exemplify our commitment to this mission. So Utkarsh, could you change the slide? Firstly, we would be talking about the Jal Jeevan Mission. This is a prestigious project in collaboration with Government of India. This the objective is to ensure access of potable water for over 1 lakh homes. So, in this, we are leveraging machine learning to track and address the water leakage in the distribution system. Our task involves developing and deploying advanced algorithms that can detect anomalies in water flow or predict potential leak points or and alert the maintenance team in real time. So this project is not only about technology but also about improving the quality of life of thousands of families who struggle with water scarcity. Next, we have Unmute Tech. This is a collaborative project funded by various many entities. The goal of Unmute Tech is to address the limitations of the current speech and voice-based interactions. We aim to open up intelligent interfaces to digitally unheard, such as individuals with speech impairments or those in remote areas with limited access to digital literacy. So our contribution involved developing a deployable application that teaches basic skills to adults who have never attended schools. This application uses intuitive voice and speech recognition technology, making it accessible and easy to use. So moving on, uh, next would be Samvad Sathi. Utkarsh, could you change the slide? Moving on, our next project would be Sathi Samvad. Uh, Utkarsh, could you like move to the next slide? So till we move to the next slide, I will be briefly explaining about what is Sathi Samvad. So this project targets a significant section of Indian society that lacks basic English literacy. So using modern language such as modern language learning models, we develop a fully deployable web application that takes audio and text in regional languages such as Tamil, Gujarati, Marathi, Telugu, Malayalam, and Bengali. This application provides responses in the same regional language, making it an invaluable tool for those who are not compatible with English. So this project not only promotes digital inclusivity but also empowers individuals by providing them with a platform to access information and services in their native language.
So moving another networthy project is the analysis of policy sentiment. This initiative aims to assist policymakers by providing insights into the public opinions regarding various policies. So, our application scrapes tweets related to a specific topic from Twitter and uses machine learning to categorize these tweets into several emotional categories. By analyzing the sentiments expressed within these tweets, policymakers can gain a better understanding of public relations and sentiments towards their decisions. This data-driven approach helps in making informed decisions for policymakers and ultimately leading to more effective governance. So lastly, we have another project named as PhonePe Shiksha, so which was developed in collaboration with Prajayatna, a popular educational magazine. The aim of this app is to enable unprivileged children to acquire basic skills in a gamified manner. The the application transforms learning into an engaging and interactive experience, making it easy for children to uh, grasp like essential skills. By gamifying education, we hope to inspire a love for learning and provide these children with the tools they need to succeed academically and beyond. So these projects highlight our dedication to using technology for social good. Each project is a step towards a more inclusive and empowered society. We look forward for your participation and contribution in the future projects. If you have any questions or need more details regarding these projects, you may feel free to reach us out. So currently, this was up for the projects or past works that we have been involved in. So I would like to pass on the baton to Divyanshi to complete the later part of the presentation. Yeah, so over here we will see like what we expect from you. So first of all, we are expecting curiosity and enthusiasm, willingness to learn, and collaborative spirit and commitment. So over here, like हम लोग we don't expect you to have any previous prereq requirement. Over here, we expect तुम लोग enthusiasm से काम करोगे, and we will be just rolling out the Seki recruitment tasks soon. So, like, Utkarsh, can you move on to the next slide? Yeah. 1 minute. So now we will move on to discuss the Seki recruitment process. The students who are interested in HCI, who are willing to work with us and be a part of this group, can just scan up the QR over here and fill out the forms. So for the Seki recruitment, we will first give you tasks. Based on it, you will be called for interviews, and the tasks will be rolled out just after the upcoming midsims. So as I just now told you that no prereq is required. So it is so because the tasks are framed in such a manner that the topics involved can be learned in a given time frame. So don't be worried that you don't have a previous skill set with you. Just be sure that you will be judged on how much the efforts you are putting in it. And lastly, I would like to say that we will prefer quality over quantity. तुम्हें अपना effort दिखाना है हमें. You need to show us that what you have for us. And at the last, अगर तुम्हें Seki recruitment tasks में कोई भी problem आती है, you can reach out to any of the leaders. You can ask us that how you need to approach that particular task, what all resources you need for it. You can ask us for the same. So over here, we want to see your potential, like what value you can add to our club. So like Ria, can you just wind it up? Ria, can you just wind it up? Hello. Maybe she has some a network issue. Okay, so like किसी को कोई भी problem हो like Seki recruitment task से related, because the meet was mainly to tell you do and how we are going to proceed next. So the tasks will be rolled out based on the Seki recruitment forms that you are going to fill. Scan up the QR
and fill out the forms. And after the midsems, you will be getting your tasks. You will be given a time frame of approximately 3 days to complete on the tasks. Then we will be scheduling your interviews accordingly. So it was a nice meet talking to you guys and discussing over it. किसी को कोई भी queries हो, कोई भी issues हो, you can discuss with us. You can reach out to the leaders. Again, I will like to call out that कि I, Utkarsh, Riya, Devdhar, and Srijan. We are the leaders. Our contacts have been attached in the mails that you have got, so you can reach out to us anytime. So if anybody has any doubt or anything to ask for us, you are free to do so. So you may unmute yourself or you may ask anything if you want to ask us in the chat. So I guess since there is no activity, so I guess you don't have any doubts regarding this. But in case if you have any doubts or in case if you want to know anything more, you can reach any of the leaders. So let's conclude this session for today. So thank you for your time and attention, everybody. Okay, we have one question. When will the task be released? Okay, so we have planned to currently release the tasks after the completion of the mid-semester exams for the summer term. We kept this in mind so as to not disturb your summer term preparation processes, so that you could have free time and give your best to the projects. So to answer your question, it would be the task will be released after the mid-semester exams. Okay, so if anybody That has, would be around 16th to 17th June. yeah. So if anybody has any other question, they may feel free to ask. Okay, so if गाइस बाकी जो लोग तुम्हारे साथ वाले ज्वाइन नहीं कर पाए हैं कुछ एसएनटी क्योंकि आज मैं उसकी वजह से ज्वाइन नहीं कर पाया हूँ, तो उनको भी सेशन के बारे में बता देना है एंड वॉट एवर यू केम टू नो अबाउट द सेशन, तो अपने दोस्तों को भी सेशन के बारे में बताओ. so like let's wind up the session for today. So thank you everybody for your okay, we have another doubt. Yeah, Naman, you can ask about. Naman, do you have anything to ask? Naman, if you want to ask us anything, you may unmute yourself and ask. Okay, so since we don't have any activity from Naman, so guys, if you have any other doubts or questions, you are free to like reach out any of the leaders and get the questions clarified. So since we have no like doubts left, like okay, now we have got a question from Naman. So Naman, like to answer your question, ACM at IIT Kanpur is quite a new initiative. Like we have been associated with ACM for the past year, but the projects were done on the group wise basis, and it was not a full-fledged club, and everybody had like less information regarding it. But from this tenure onwards, we are trying to counter this challenge, and we are planning to incorporate more people who are interested in ACM and human-computer interaction, and to gain a diverse group of community who can contribute to the social good. Naman, does that answer your question? Also, Guys, बाकी also I can add to that, like as Devdar said, that we started ACM last year only, and we are quite a new initiative. You can
feel free to reach us out if you want to know more about us, or you can look at our projects that we are doing. We are doing some really impactful and good projects. Uh, and you can also speak to our faculty advisor, Shruti ma'am, or any professors in the design department. Uh, so Okay, so if anybody has any further question now, okay. No, Naman, like projects are a complete full-fledged uh, entity where all of the domains come together and we build the projects. We have a separate team for design, separate team for product development, separate team for development. So it's not just related to design. We incorporate so many other things. Like at the start of the presentation, we had like explained what domains we cater to. So it's not just Nam related to design. We incorporate so many other things. Also, uh, नमन design. जैसे कि तुम ये वाला भी प्रोजेक्ट देख सकते हो हमारा, इट इंक्लूड एलएलएम। बाकी तुम जैसे पर्सन लोगों से इंटरेक्ट करना है, लाइक तुम्हें लोकेलिटी में इंटरेक्ट करना है, तो इट विल बी अ फोन ऐप। तो वो चीजें आ जाती है यूजर एक्सपीरियंस में, यूजर आइडेंटिटी में। तो यहाँ पे तुम्हारा यूआई यूएक्स आ जाता है कि उस ऐप को कैसे बिल्ड करोगे तुम पूरा एलएलएम मॉडल प्रॉपर बिल्ड कर रहे होंगे तो उसमें तुम्हारा एआई एमएल आ जाता है। बाकी तुम ऐप का इंटरफेस जैसे बनाओगे उसमें तुम्हारा डिजाइन वाला पार्ट आ जाता है। उस प्रोडक्ट को तुम कैसे फैलाओगे वो तुम्हारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला पार्ट आ जाता है। तो वी हैव 4 और 5 सब फील्ड जो हर एक प्रोजेक्ट में तुम्हारे कवर होंगे, और टास्क में भी तुम्हें 4 5 प्रोजेक्ट दिए जाएंगे। उन 4 5 चीजों का टास्क दिए जाएंगे। डोंट वरी अबाउट कि इट विल बी ऑल अबाउट डिजाइन एंड ऑल। बाकी किसी को भी कोई डाउट है तो एक बार हमारे पास्ट प्रोजेक्ट्स देखो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली व्हाट वी डू एंड हाउ आवर प्रोजेक्ट्स विल बी। Ayushman, can I ask something? या श्योर। So all these projects that AC and CG IT Control have, like are they all hosted on GitHub right now? uh, we'll release the code soon. Oh, okay. Soon as in before the task or after the task, can I ask? Can you ask again? Uh, uh, I was wondering when, like, before the tasks or after the It task. it it will be after the big sense. Like Ayushman, for the like uploading on the GitHub, few projects have been completed and few projects are pipelined and few projects are like in the middle of the way. So whatever projects we have completed and whatever like things we have done, we will surely like post their codes on GitHub. But we haven't decided any like hard deadline yet that by when we'll be doing it. So basically. So we will be providing you with the like detailed codes of whatever projects we have done. That is for sure. But currently we have not like planned anything like will we be doing it before the task or after the task. Uh, Also adding to that, you will get to see some codes for the 3 4 projects that are completed. For example, for the Jal Jeevan mission, we cannot release the code because the project is still going on, and there is an NDA agreement. But for others, we can release. Maybe by next week, you should get to see some codes. Yeah, okay, that would be helpful to actually understand the projects in more Yeah, detail. sure. Yeah, thanks a lot. हाँ, तो नमन मैं तुम्हारी बात पे आने वाला था। तो मैं कह रहा था इस एक प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने के थ्रू मैं कह रहा था कि जैसे तुम्हारा ये प्रोजेक्ट है तो इसमें तुम एलएलएम भी करोगे, तो वहां तुम्हारा टेक पूरा आ जाएगा एआईएमएल पोर्शन वाला। और तुम यूजर के हिसाब से बिल्ड करना चाहोगे ऐप की, लाइक जैसे हमारे यूजर है इन जनरल सबके पास लैपटॉप्स नहीं होते हैं, ठीक है, तो इट विल बी अ फोन ऐप। तो वहां पे तुम्हारा यूजर डिजाइनिंग वगैरह का पोर्शन आ जाएगा। तुम कैसे उस ऐप का इंटरफेस बनाते हो वहां तुम्हारा डिजाइनिंग वाला पोर्शन आ जाएगा। एंड हाउ विल यू सेल दैट प्रोडक्ट, उसमें तुम्हारा वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाला पोर्शन आ जाएगा। तो इट विल नॉट जस्ट अबाउट डिजाइनिंग एंड ऑल, ये तुम्हारा फुल फ्लेश प्रोजेक्ट रहने वाला है जिसमें तुम्हारे 4 5 चीजें कवर होगी, और टास्क में भी तुम्हारे को 4 5 चीजें ही दी जाएंगी। ओके ना मैम?
I think he's left the meeting. Um, ओके सो किसी को डाउट नहीं है तो ठीक है. Okay, so उत्कर्ष conclude कर दे क्या? या आई थिंक So guys, we are ओके. like बाकी तुम्हें इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा मिल जाएगी अगर तुम्हें Yeah. किसी दोस्तों वगैरह को दिखानी है. यूट्यूब चैनल पे अपन डाल देंगे और वी विल शेयर द लिंक on the So, mail end of the SECI filling form. guys, we had one request is that many of you haven't been able to attend today's session due to various other commitments. So we would request you to share spread a word about this, and also people who are enthusiastic about human computer interaction or in general are technology enthusiasts. We would like urge you to convey this information to them. So we will wind up today's session. So thank you everybody for your time and attention. We look forward to having you join us in this exciting journey. So let's work together to push the boundaries of HCI and make a positive impact on society. As we have mentioned earlier, you are free to reach us out. You may reach any of the leaders if you have any questions or need further information. So let's meet at the Secure Recruitment Drive. See you there.